All right, let's continue mass, weight, and density. Question 21 to question 25 हम करेंगे इस वीडियो में. Let's start. Question 21. Which expression is used to calculate density? Density is equals to density is equals to mass divided by volume. कौन सी expression नजर आ रही है? Mass divided by volume. So B is the right answer. Very easy question. Question 22. There is an astronaut on a planet which has a gravitational field strength one-fifth of that of the value on Earth. अच्छा 1/5 है. Earth पे gravitational field strength कितनी थी? You guys should know this. It's 10 Newton per kg. One-fifth that अगर हम divide कर दें, divide by 5. One-fifth is 1 divided by 5 into 10. It will be 2. So on the other planet, the gravitational field strength is 2 Newton per kilogram. ठीक है ना? We have this figured out. He hangs samples of rock from a spring balance designed for use on Earth. Each sample has a mass of 0.1 kilogram. The spring balance reads 1 kilogram. How many sample of rocks are there? अच्छा, when you use a spring balance, अगर spring balance के ऊपर कोई force apply करें, it extends, right? So whatever the force needed to extend it on the Earth will be needed to extend it on the other planet. जो भी force है ना, और वो अर्थ पे यूज हो रही है स्प्रिंग बैलेंस को 1 किलोग्राम पे लेके जाने के लिए, द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी नीडेड ऑन द अदर प्लैनेट, राइट? सो वी हैव टू डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन. तो W इज इक्वल्स टू mg, दैट्स द फॉर्मूला. मास क्या है? 1 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ हियर राइट नाउ. दैट इज 10. सो वी गॉट द force required to extend that spring balance. So that is 10 Newton. अच्छा 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए उस स्प्रिंग बैलेंस को एक्सटेंड करने के लिए, राइट? सो द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी नीडेड ऑन अनदर प्लैनेट. ठीक है ना? तो अब हम अगले इक्वेशन पे जाते हैं, ठीक है ना? बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 10 न्यूटन यहाँ आ गए. W इज इक्वल टू एम जी लगा रहा हूँ. 10 इज इक्वल टू मास. अभी हमने मास नहीं निकाला. मास डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने क्या निकाली थी? इट्स 2. वी हैव टू फाइंड आउट द मास. तो 2 न्यूटन है. 2 न्यूटन पर किलोग्राम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. सो दैट वी हैव पुट दैट हियर. दैट विल गिव अस 5 इज इक्वल टू मास. मास इज 5 kilograms now. We found out the mass. अच्छा, how many sample of rocks are there? अच्छा देखें अब आप, कैलकुलेटर निकाल लिया हमने. 5 kilograms है, ठीक है ना? अच्छा, कितनी रॉक्स चाहिए होंगी ऑफ 0.1 kg to have 5 kilograms of mass? We will need 50 rocks. B is the right answer. We will need 50 rocks in order to have 5 kilograms worth of mass. Question 22 हो गया. Question 23 पे चलते हैं. Four objects on different masses are situated in places with different gravitational field strength. Which object has the greatest weight? Acha, now we have to use W is equals to mg again. W is equals to mg. We have to find out the greatest weight, right? So 3 into 10.4. 3 into 10.4. This will give us W is equals to 31.4. अब अगला देखते हैं. W is equals to 3.5 into 9.5, which will give us the weight will be 3.5 into 9.5. This will give us 33.25. 33.25. अब अगला देख लेते हैं. W is equals to, अब सीधा मैं सीधा सीधा कैलकुलेशंस कर रहा हूँ. अब आई डोंट थिंक यू नीड दैट.
This is, I think, 40.8, 40.8 न्यूटन्स, राइट। और अगला देख लेते हैं। अगला वाला होगा डी, और डी, द वेट विल बी 4.5 इंटू 9, 40.5, 40.5। पिछले वाला भी कंफर्म कर लेते हैं, इफ आई डिड एनी मिस्टेक्स। 4 इंटू 10.2 40.8। ओके, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? इट्स 40.8, which will give us the answer C, because that's the latest weight we achieved. We calculated. Question 24. The mass of P is greater than the mass of Q. The object contain different amount of matter and have different resistance to change of motion. Which row is correct? Acha. The more resistance there is, the more mass there is, the more resistance there will be to the change in motion because of the phenomenon called inertia. Inertia ये स्टेट करती है कि जितना ज्यादा मास होगा ना, उतनी रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन होगी। सो दैट मीन्स कि अगर P का ग्रेटर मास है, तो P की ही ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन भी होगा, राइट। सो ए इज द राइट आंसर, एंड आई थिंक 25th is a repeated question, ये वाला। So the answer will be C. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Have a great one. Allah Hafiz.